जैसे ही हम मर्जर या विलय का नाम लेते हैं तो मैनेजमेंट के दिमाग में आता है कि बड़ा लंबा प्रोसेस होगा, मुझे शायद कोर्ट जाना पड़ेगा, हो सकता है मुझे एनसीएलटी जाना पड़े। जी हाँ, बिना एनसीएलटी जाए भी विलय हो सकता है कंपनियों का, और उसको कहा जाता है फास्ट ट्रैक मर्जर। Okay, so this is a very relevant question, Dinkar ji, and fast track merger का सबसे पहला benefit है that it is time bound. It is again time bound. Person has to appear once or twice and has to convince the respective authority, and he can get the order, favorable order. तो क्या कोई लिमिट है कि कितनी कंपनी इसका विलय हो सकता है या मर्जर हो सकता है? ऐसी कोई लिमिट नहीं है, ऐसी कोई लिमिट। तो आपका कभी एक्सपीरियंस रहा कि 2 से ज़्यादा कंपनी का विलय हुआ हो? So I have been fortunate enough to handle the matter wherein I have recently merged near about 13 group companies. वाओ, क्या एक लॉस मेकिंग कंपनी भी फास्ट ट्रैक मर्जर का फ़ायदा उठा सकती है? That is a very relevant question, Dinkar ji. आपने बताया 9-10 मतलब 90% हो गया, तो 90% से क्या तात्पर्य हुआ कि 90% जो क्रेडिटर्स वहाँ पहुँचे मीटिंग में इन पर्सन प्रेजेंट हैं उनका 90%, या इन वैल्यू आप कहना चाह रहे हैं? That's a very gray area which you are talking about, Dinkar ji. But नमस्कार दोस्तों, मैं हूं CS दिनकर शर्मा और आज आप हमारे साथ जुड़े हैं जोतवानी लीगल टॉक्स पर, जहां हम सिंप्लीफाई करते हैं लॉ को रियल बिजनेस पर्सपेक्टिव के साथ। दोस्तों, आज का ये एपिसोड थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज हमारे साथ जुड़े हैं एक डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट। मैं दिल से स्वागत करता हूं श्री संतोष पांडे जी का, जो कि NIRC ऑफ ICSI के चेयरमैन हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका संतोष जी। नमस्कार, थैंक यू सो मच दिनकर जी मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जोतवानी लीगल टॉक्स में आज चर्चा करने हेतु यहाँ पे आया हूँ, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ ग्रेट इंटरेक्शन विद द पीपल। थैंक यू। थैंक यू। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं दोस्तों। एक फैमिली बिजनेस है जिसमें 2-3 कंपनियां हैं, एक होल्डिंग कंपनी है, कुछ सब्सिडरीज हैं। आप मैनेजमेंट काम करती है लेकिन कंपनीज के बिजनेस ओवरलैप हो रहे हैं, कॉस्ट बढ़ रही है, टाइम ज़्यादा लग रहा है चीज़ों में। तो कंपनी मैनेजमेंट चाहती है कि कंपनियों का विलय हो जाए या किसी तरह से मर्ज हो जाएं और उनको कम कंपनियां चलानी पड़ें। लेकिन जैसे ही हम मर्जर या विलय का नाम लेते हैं तो मैनेजमेंट के दिमाग में आता है कि बड़ा लंबा प्रोसेस होगा, मुझे शायद कोर्ट जाना पड़ेगा, हो सकता है मुझे NCLT जाना पड़े। तो एक तरह का डर मन में आ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मर्जर यानी कि विलय बिना NCLT जाए भी हो सकता है? जी हाँ, बिना NCLT जाए भी विलय हो सकता है कंपनियों का, और उसको कहा जाता है फास्ट ट्रैक मर्जर, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं संतोष जी के साथ। तो संतोष जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मर्जर एक्चुअल में होता क्या है, जिसमें पहले किस प्रकार से किया जाता था और आज की डेट में किस प्रकार से किया जाता है? Okay, so this is a very relevant question, Dinkar ji, and to answer this particular question, we can divide this, into two parts. First, under the Companies Act 1956, and secondly, under the Companies Act 2013. So, in the earlier Act, 1956 Act, only the High Courts were allowed to do the merger and amalgamation, to pass the order of merger and amalgamation, and only the advocates were allowed to appear before those courts. So after the introduction of Companies Act 2013, it is having two subparts, in which one part is allowing and empowering the honorable NCLTs to pass the orders of merger and amalgamation or demerger, etc. And second part is the honorable RD, wherein section 233 is playing the role, and honorable RDs under the MCAs has been empowered to allow the mergers of certain classes of company which has been specified under the Companies Act 2013. राइट। संतोष जी, एक सवाल, हमारे CS प्रोफेशन में किस तरह से इसको टेकअप किया है मर्जर को? CS प्रोफेशन ने मर्जर एमलगमेशन को बहुत अच्छे तरीके से टेकअप किया है सर। इवन इफ आई टॉक ऑनेस्टली अबाउट इट, देन प्रायर टू 2013 एक्ट आवर हैंड्स वर कफ्ड that we are not allowed to appear before High Court. But after the introduction of 2013 Act, I have personally observed that a lot of company secretaries are appearing before Honorable NCLT in the matters of merger amalgamation. Also, this particular new domain of so-called fast-track merger before the regional director is also bringing a very good opportunity for company secretaries, and they are doing a lot of assignments before respective IDs. तो संतोष जी, जैसे बात आती है फास्ट ट्रैक मर्जर की, तो क्या ये फास्ट ट्रैक मर्जर कहीं किसी कानून में स्पेसिफिकली मेंशन है ये वर्ड फास्ट ट्रैक मर्जर,
या ये क्या है एक्चुअली फास्ट ट्रैक मर्जर? So fast track merger is very rightly pointed out. Fast track merger is not defined anywhere in this particular Companies Act 2013. This word is not used actually, but this is the practical term which has been given to the provisions of Section 233. And why it is so? Because 233 is allowing the merger of certain companies in a simplified manner and also in a time-bound manner. So why I am saying time-bound manner, because it is allowing there is a particular timeline for every sort of activity to be done therein, and that's why this is called fast track merger in practical terms. राइट। अब हम सवाल ये उठता है कि एक्चुअल में फास्ट ट्रैक मर्जर की जो स्कीम है या फास्ट ट्रैक मर्जर क्या है, इसको समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि इसकी बारीकियां क्या हैं। फास्ट ट्रैक मर्जर को आप बड़े सिंपल तरीके से समझिए दिनकर जी। फास्ट ट्रैक मर्जर, फर्स्ट ऑफ ऑल मर्जर वही सेम एक्टिविटी समझ लीजिए आप, जो एनसीएलटी में होती है वही यहाँ पे हो रही है। फास्ट ट्रैक मर्जर अगेन reiterating that respective RDs has been given the power, and now not going through the judicial process which was earlier prescribed for under the 1956 Act for before, which used to happen before high courts, and also the general process which has been prescribed to appear before the NCLT and do the judicial proceedings for the merger and amalgamation. This has been carved out now, and lot of companies has been brought into the domain of RDs, and they can avail this facility. So there is no such, again, this no such difference except the procedure. So this procedure has been differentiated from the normal merger process under the which used to happen, which generally happens under honorable NCLT. ओके, तो या यूँ कहें कि जो काम एनसीएलटी दूसरे मर्जर के लिए या बड़े मर्जर के लिए करती है, वही काम आरडी साहब फास्ट ट्रैक मर्जर के लिए कर सकते हैं, आप बिल्कुल, जो कि जल्दी हो जाता है आम भाषा में अगर हम इसको कहें। बिल्कुल आप ही कह सकते हैं सर। वैलिडिटी ऑफ बोथ द थिंग्स आर सेम। राइट सर, इस फास्ट ट्रैक मर्जर के लिए कौन सी कंपनीज एलिजिबल हैं? क्या सभी कंपनीज फास्ट ट्रैक मर्जर में जा सकती हैं या कुछ चुनिंदा कंपनीज को ये हक है? नहीं, फास्ट ट्रैक मर्जर में आज की डेट में मैं बात करूं, सबसे पहले क्या था कि स्मॉल कंपनीज वर अलाउड, ओनली द स्मॉल कंपनीज एंड द होल्डिंग एंड होली ओन सब्सिडरीज कंपनीज वर अलाउड। देन लेटर ऑन द स्टार्टअप कंपनीज वर आल्सो ब्रॉट इनटू द डोमेन ऑफ फास्ट ट्रैक मर्जर, and then startup companies and small companies can also merge together. That has also been introduced. Then recently, from the notification dated 4 September 2025, if I'm correctly recalling, the unlisted companies has also been allowed to avail the facility of fast track merger, and though there are certain prerequisites which has to be definitely adhered, and this has actually widened the scope of fast track merger. And also looking at the current scenario, the foreign companies are also allowed to merge with the Indian wholly owned subsidiaries if it is meeting the criteria, and Section 233 is available for them also. So it is having a very huge domain. जी संतोष जी, क्या सेक्शन 8 कंपनीज जो हम एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट होती हैं, गवर्नमेंट कंपनीज भी जिनको कहा जाता है, क्या वो फास्ट ट्रैक मर्जर को अवेल कर सकती हैं? See, Section 8 companies cannot avail the benefits of Section 233. It is clearly not allowed. Even the unlisted companies, it has been mentioned in the law that unlisted companies, not being the Section 8 companies, are only allowed to have the facility of fast track merger. तो जहाँ अनलिस्टेड कंपनीज की बात आती है, वहीं सवाल एकदम से आता है कि क्या लिस्टेड कंपनीज पे ये एप्लीकेबल होता है? Yes, so that is a very relevant question. Listed companies can definitely avail the benefits of fast track merger, but subject to that the transferor company which is going to merge and dissolve shall not be the listed company. The transferee company which is going to exist post merger can be a listed company. अच्छा, तो मतलब जो कंपनी विलय के बाद रहेगी, जिसका वजूद रहेगा, वो कंपनी लिस्टेड कंपनी हो सकती है। Yes. जी धन्यवाद। अच्छा, इसके फास्ट ट्रैक मर्जर के क्या बेनिफिट होते हैं? अगर कोई फास्ट ट्रैक मर्जर में जाता है तो उसको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? फास्ट ट्रैक मर्जर का सबसे पहला बेनिफिट है दैट इट इज़ टाइम बाउंड, एंड सी इफ वी लुक एट द करंट सिनेरियोज, देन लॉट ऑफ मैटर्स आर देयर इन फ्रंट ऑफ ऑनरेबल एनसीएलटी. They are already overburdened, and they are taking a lot of time to dispose of one application, though they are trying their level best. But practical challenges or certain challenges we can observe. But in case of fast track merger, it is time bound firstly. Secondly, honorable RDs are also very active
They are having free hand to decide this particular matter. So this is the first benefit. Secondly, it is the cost efficient process also. Because tomorrow, when I talk about honorable NCLT, one person has to go again and again and appear before the court or the tribunal, then definitely the charges will be definitely high. And also that there is this going to be time taking, then definitely the professional will charge high fees also. But in case of honorable RD, since it is again time bound, person has to appear once or twice and has to convince the respective authority, and he can get the order, favorable order. Right. Yes. अगर इसमें हम जैसे आपने अभी बताया कि टाइम बाउंड होता है तो कितना टाइम लग जाता है इसमें लगभग? See, इसमें after the filing of the final scheme with the regional director MCA, the time prescribed is 60 days maximum. Okay. Within 60 days, this particular application has to be disposed of. ये तो बहुत जल्दी हो जाता है. बहुत जल्दी हो जाता है. And within this 60 days, you have to get the report of ROC, you have to get the report of ROC and OL. जबकि NCLT में तो अब 2 महीने में हो सकता है आपका नंबर ही ना आए, केस लगे ही ना. हो जाता है. राइट. देखने को मिलता है ये चीज़ें. तो फास्ट ट्रैक मर्जर के लिए हमको किन डॉक्यूमेंट्स को, कंपनी को अगर कोई जाना चाहती है तो उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने चाहिए? See, the first thing the companies which are going for fast track merger is that they have to see that their MOAs, respective MOAs, memorandum of association, is allowing that merger power. The power is there in the MOA. So if it is not there, then the alteration of MOA has to be done at the first instance, first of all. Secondly, that you have to look after the appointed date, whatever you want to fix for that. Thirdly, you have to hold the board meeting to approve the scheme, whatsoever you will draft. In that scheme, generally the clauses are that all the liabilities, all the assets, all the obligations, all the duties, responsibilities will be transferred by the transfer company to the transferee company, and also the valuation at which the transfer is happening, also the assets which are getting transferred, the list of that asset, movable, immovable, both. That is the ingredients of scheme overall. And then you have to look for the shareholder resolution. Requisite approval has been obtained actually. Creditors consent has also been obtained, whatsoever has been prescribed in the law. Board meeting has been happened. Requisite form filing has been done of MGT 14 or GNL 1 or whatsoever has been prescribed. So these are certain documents which has to be filed, has to be there. सर जनरली ऐसा माना जाता है कि फास्ट ट्रैक मर्जर में 2 कंपनीज ही इन्वॉल्व होती हैं, एक ट्रांसफरर कंपनी और एक ट्रांसफरिंग कंपनी. तो क्या कोई लिमिट है कि कितनी कंपनी इसका विलय हो सकता है या मर्जर हो सकता है? ऐसी कोई लिमिट नहीं है. तो आपका कभी एक्सपीरियंस रहा कि 2 से ज़्यादा कंपनीज का विलय हुआ हो? So I have been fortunate enough to handle the matter wherein I have recently merged near about 13 companies. Wow. Yes. 13 कंपनियों का एक साथ मर्जर. Yes. राइट. सर क्या एक लॉस मेकिंग कंपनी भी फास्ट ट्रैक मर्जर का फायदा उठा सकती है? That is a very relevant question, Dinkar ji, because a lot of professionals generally call and ask this particular question that there is a myth in the market that loss making company cannot go for the fast track merger, though the loss making is not any criteria to be judged prior to availing the facility of fast track merger. Only criteria is that the companies which are going for the fast track merger in section 233, they have to be solvent. Okay. There has to be a declaration of solvency which has to be filed by the respective companies going for the fast track merger in section 233. Okay. सर ये डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी जैसे आपने बताया, तो ये कौन डिक्लेयर करता है? The company declares. कंपनी खुद डिक्लेयर. The company declares कि मैं सॉल्वेंट हूँ. Yes, solvency means that the company is able to pay its debts and liabilities. Right. Yes, there is no such default or no such issue with the company that tomorrow this company can get insolvent. That is the only criteria. Right. तो सर क्या कोर्ट की भी किसी तरह की अप्रूवल चाहिए होती है फास्ट ट्रैक मर्जर में? See, at the first instance, the approval of the regional director will work. There is no such requirement of the NCLT approval. But if the central government, means the respective RD, is of the view that the scheme of merger of the companies in section 233 is against the public interest or is against the interest of its stakeholder, including creditors, then that respective RD has to move the application
to the honorable tribunal for their particular decision. Okay. Only in that case the honorable NCLT comes into picture. Otherwise, in other sense, again there is a myth that whether the companies which has been prescribed under section 233, whether they can avail the facility of the journal process prescribed for merger, which is under 230, 232. So again, reiterating that fast track merger is a special procedure which has been prescribed. So those companies which are falling under the classes of section 233, they can also go for 232. There is no specific bar that they cannot go before NCLT. If they are finding it comfortable to go before honorable NCLT, they can definitely go before that. ओके, तो मतलब अगर कोई कंपनी फास्ट ट्रैक मर्जर अवेल कर सकती है, लेकिन वो चाहती है कि मैं NCLT के आगे जाऊं, तो भी वो जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है. Because say if I talk from my perspective, say I am in Prayagraj, okay, so for me NCLT is approachable. Bench is there. But if I talk about the fast track merger, then I have to come to RD. RD is there in Delhi. So that is all depends upon the approach and all. Right. तो अगर सर जैसे आपने अभी बताया कि कोई ऑब्जेक्शन आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट वो सोचती है कि पब्लिक उतनी इंटरेस्ट में नहीं है ये स्कीम, तो आरडी अप्रोचेस एनसीएलटी. RD has to forward the application. तो फिर एनसीएलटी उस मर्जर को पूरा प्रोसेस करेगी. प्रॉपर प्रोसेस होगा. ओके सर, इसमें सर एक और ऐसा कहा जाता है कि एनओसी फ्रॉम क्रेडिटर्स चाहिए होता है फास्ट ट्रैक मर्जर के लिए, तो क्या एनओसी है सर, ये किस लिए चाहिए होता है? So NOC is no objection certificate which has to be obtained from the creditors that they are not having any objection to the scheme, proposed scheme of merger. If we talk about from this particular topic, the fast track merger. So presently the 9/10 of the value of the creditors has to give the NOC that then only this particular merger can be approved by the respective RD. राइट सर, जैसे आपने बताया 9/10 मतलब 90% हो गया, तो 90% से क्या तात्पर्य हुआ कि 90% जो क्रेडिटर्स वहाँ पहुँचे मीटिंग में इन पर्सन प्रेजेंट हैं उनका 90%, या इन वैल्यू आप कहना चाह रहे हैं? That's a very gray area which you are talking about, Dinkar ji. But presently, practically, what is happening is that that is my personal observation that the respective RDs are taking the view that it is 9/10 of the total value, irrespective of the fact that creditor or shareholder is present in the meeting or not. कुछ दिन पहले ही जब कंपनी सेक्रेटरीज का इंटरेक्शन हुआ था एमसीए सेक्रेटरी के साथ, तो यही क्वेश्चन आपने वहाँ पर भी उस प्लेटफॉर्म पर रेज किया था. Yes, you are right, Dinkar ji. I have shared this particular suggestion with the Honorable Secretary MCA Diti Mukherjee ji, and that was an open platform. The interaction was open, and we are blessed to have that particular interaction. And wherein, this particular suggestion was given after my observation that RD is taking the view it should be the consent or the NOC should be from the 9/10 of the total value. They are not considering the actual practical challenge which the companies are facing, that company can invite that particular member or the creditor to the meeting. They cannot force them to come to the meeting. They cannot force them to give the consent. So that is, so ideally it should be, to my view, it should be 9/10 of the total value of the members or creditors present and voting. Then only it will suffice the purpose. Right. Otherwise, now this particular gray area is so big that the companies which are having huge number of shareholders or creditors, they are in a doubt whether they have to approach RD because RD is asking for the 90% of the NOC, 90% of the value of creditors to give the NOC. Now, instead of that companies are preferring to go before NCLT, wherein it is clearly mentioned it should be from, or the precedents are there, wherein it has been clearly mentioned that it is the value, the consent or the NOC which has to be obtained is of the present and voting only. So that's why this particular challenge was there, and that's why the suggestion was given by me to the respective. जी बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत मुश्किल हो जाता है कंपनीज के लिए कि 90% का एक साथ एनओसी लेकर के आना. बिल्कुल, जिस कंपनीज में अगर मैं बात करूं 2000-3000 क्रेडिटर्स हैं, करेक्ट, तो उनके लिए डेफिनेटली ये डिफिकल्ट हो. राइट. यस. तो सर क्या क्रेडिटर्स के पास ये पावर है कि वो ऑब्जेक्ट कर सकें स्कीम को? बिल्कुल है, वो डेफिनेटली कर सकते हैं. द नोटिस टू द क्रेडिटर्स इज ऑलवेज सेंट ऑफ द स्कीम, एंड दे आर हैविंग राइट टू
object that scheme. And also I would like to add in here that recently in the corporate law amendment bill, the concept of president and voting has also been introduced now. अच्छा, yes. तो ये जो ग्रे एरिया था वो यहाँ पे कवर हो जाएगा अगर ये अमेंडमेंट बिल पास हो जाता है और एक्ट बन जाता है. ओके. और अगर क्रेडिटर्स ऑब्जेक्ट कर दें इस फास्ट ट्रैक मर्जर की स्कीम को, तो उस सूरत में क्या होगा? Then the argument will happen before the respected RD, and RD has to take the cognizance of that particular case. They have to pass the judgment after the hearing. तो क्या क्रेडिटर्स के पास भी राइट है वो उस प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकते हैं आर्गुमेंट्स के द्वारा? That has to happen. Okay. It is the principle of natural justice. If they are objecting to the scheme, then they will be called for the hearing. Okay. Obviously. सर क्या एक फॉरेन कंपनी वो भी मर्ज हो सकती है फास्ट ट्रैक मर्जर के थ्रू? Yes, I have already mentioned that earlier also when you have asked that question, whether what kind of companies can come under the domain of section 233. So only the foreign companies, foreign holding companies, being the transferor company, getting merged with the Indian wholly owned subsidiary companies, are allowed. होली ओन्ड होनी चाहिए. होली ओन्ड होनी चाहिए. और मतलब सीधा सा इसको मैं ये समझूं कि जो कंपनी एग्जिस्टेंस में रह रही है वो इंडिया में रहनी चाहिए. वो इंडिया में. हमारी कंपनी बाहर नहीं जा सकती, बाहर की कंपनी इधर आके विलय हो सकती है. बिल्कुल करेक्ट. सर अगर फास्ट ट्रैक मर्जर की बात करें तो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं? So see, merger and amalgamation has been defined under the Income Tax Act. So whatsoever benefit has been there prescribed, if the criteria, or I would say the requirement which has been mentioned therein, if it is meeting out, then it will be tax neutral. Okay. Yes, the merger will be tax neutral. Okay. और मर्जर अगर हम देखें सर कि एक कंपनी है जो गुजरात में है, मर्जर हो गया दिल्ली की कंपनी के साथ, अब दिल्ली की कंपनी एग्जिस्टेंस में रह गई तो गुजरात वाली कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ होंगे उस समय तो उनका क्या होगा? That particular thing has to be taken care in the scheme. Again, that scheme shall be in the interest of the stakeholders. Stakeholders includes creditors, shareholders, and also the employees. So generally that we have observed that in the merger, the employees of the transfer companies will become the employees of the transferee companies post merger. Oh. Yes. राइट. तो ट्रांसफररी कंपनी को उनके एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखना पड़ेगा. ट्रांसफररी कंपनीज को. यस. राइट. सर क्या शेयर होल्डर्स भी चैलेंज कर सकते हैं फास्ट ट्रैक मर्जर में? शेयर होल्डर्स बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं इन द जनरल मीटिंग डायरेक्टली. ओके. यू कैन डेफिनेटली डू इट. फास्ट ट्रैक मर्जर में शेयर होल्डर्स का भी अप्रूवल लेना होता है, और यदि लेना होता है तो कब वो लेना चाहिए? So see, for that you have to understand the procedure of fast track merger. So firstly, that the draft scheme which has been approved by the board of directors, that is in CA9, in form CA9, that has to be filed before the respective authorities, ROC, OL, specific regulator, income tax, etc. And the time frame of 30 days has to be given to those authorities for communicating any objection to the draft scheme. After that 30 days, the company has to call the general meeting, and if any such objection has been raised by the respective departments, then that objection has to be mentioned in the explanatory statement of the notice, and also what is the reply of the board on that particular objection has to be mentioned there in the notice, and that has to be shared in the scheme as well, and that has to be placed before the general meeting. Right. And the approval of the shareholders has to be obtained. The approval requirement is 9/10 of the value at present. 9/10 ऑफ द वैल्यू जैसे क्रेडिटर्स में है वैसे ही शेयर होल्डर. एट प्रेजेंट यही है. राइट. सर इसमें एक और चीज़ सुनने में आती थी कि वैल्यूएशन रिपोर्ट भी लेनी पड़ती है कंपनीज को, उसका क्या कंसेप्ट है और कब किस सूरत में वो लेनी पड़ती है? सो वैल्यूएशन रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड सर इन केस ऑफ मर्जर, बिकॉज इफ शेयर एक्सचेंज रेशियो इज हैपनिंग, दैट कैन नॉट happen without the valuation. But yes, in cases wherein the holding company and the wholly owned subsidiary company is getting merged, wherein the wholly owned subsidiary is having only one shareholder, that is holding company, and that is not going to have any involvement of share exchange, then in that case the valuation is not required. Right. और सर एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि जब
कंपनीज का विलय हो गया तो एक जो ट्रांसफरर कंपनी है उसके एग्जिस्टिंग केसेस कुछ चल रहे हैं या पेंडिंग लिटिगेशन है, तो उन केसेस का क्या होगा? That will all be transferred to the transferee company. Not only the cases of the litigation, but also the non-compliance, if any, in the transferor company which is existing as on the date of the merger will stand transferred to the transferee company. तो ये सारा That कुछ is also हमारे part of the scheme. स्कीम के अंदर ही, वही मैं पूछना 100%. चाह रहा That था is कि also स्कीम के अंदर ही हमको इसको that take is care also the करना part of the scheme. राइट राइट राइट। सर अभी कॉर्पोरेट लॉ अमेंडमेंट बिल आ चुका है, तो उसमें मेंबर्स की अप्रूवल के लिए कुछ चेंजेस आई हैं क्या? बिल्कुल आया है, and in the corporate law amendment bill the requirement of the shareholder approval has been minimized to 75% now, and also it has been mentioned that 75% of the members present and voting at the general meeting. So this is Right. going to be a good relief for the corporates availing this particular section 233. और सर इसी अमेंडमेंट बिल में फास्ट ट्रैक मर्जर की स्कीम के ऊपर, फाइलिंग ऑफ स्कीम के ऊपर कुछ चेंजेस आए हैं क्या? So yes, there is a slight change in the introduced in the corporate law amendment bill. Earlier, what used to happen, or the current scenario, what is happening is, say suppose the company is going for the demerger of the company, or the company is going for the transfer of undertaking through the fast track mode, then that company also has to file the scheme to before the official liquidator for their report. But ideally that company is not getting dissolved, so there is no such requirement of the OL report. So this particular thing has been carved out in corporate law amendment bill, and wherein the demerger or the transfer of undertaking or asset is happening in the section 233, there is no requirement to file the scheme to the official liquidator for their report, but only in the cases of demerger. Right. If it is happening the cases of the merger, then definitely the सर अभी आपने scheme has to be जिक्र किया filed. डी मर्जर का, तो दर्शक जानना चाहेंगे कि ये डी मर्जर क्या है, क्या मर्जर और डी मर्जर में क्या अंतर हुआ? सो मर्जर और डीमर्जर में पूरा ही अंतर सर। मर्जर और डीमर्जर में क्या है कि मर्जर की बात करूं तो एक्स और वाई कंपनी है, से सपोज, तो वाई कंपनी एक्स कंपनी में मर्ज हो रही है तो वाई कंपनी पूरी डिसॉल्व हो जाती है। एंड अगर मैं डीमर्जर की बात करूं तो इसमें एक्स और वाई कंपनी है, लेकिन एक्स के सपोज 4 बिजनेसेस है, टाइल्स का बिजनेस है, टेक्सटाइल का बिजनेस है, और टी का बिजनेस है, और वाइन का बिजनेस है। एंड आउट ऑफ दीज 4 बिजनेसेस we want to transfer only 2 of the businesses, say suppose textile and tiles, we want to transfer it to the Y company, then that is called the demerger. तो उसमें एक तरह से कंपनी का, पूरी कंपनी का विलय ना होके केवल यूनिट उसका जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। बिल्कुल, डेफिनेटली। सर एक छोटा सा क्वेश्चन लास्ट में कि फास्ट ट्रैक मर्जर का ब्रीफ में आप अगर बता सके कि प्रोसीजर क्या रहता है? ब्रीफ में प्रोसीजर में बताऊँ आपको दिनकर जी, तो सबसे पहले तो अगेन एमओए आपको देखना है कि आपके एमओए में पावर है या नहीं है। देन यू हैव टू फिक्स द अपॉइंटेड डेट, यू हैव टू कॉल द बोर्ड मीटिंग टू डिस्कस द ड्राफ्ट स्कीम व्हाटसएवर यू विल ड्राफ्ट। देन दैट ड्राफ्ट स्कीम हैज़ टू बी इन द फॉर्म CA9। देन दैट ड्राफ्ट स्कीम पोस्ट अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड हैज़ टू बी फाइल्ड to the respective ROC, OL, income tax, or specific regulator if any. Then for 30 days the window will be open for the authorities to give any sort of objection or suggestion to the scheme. If any such suggestion comes, then that suggestion or objection whatsoever comes, you have to take care, the board has to give the comment on it in the scheme itself, whatsoever is going to be the final one, and to be placed before the general meeting. Then you have to call the general meeting and the creditors meeting, and the approval of the members, requisite approval which has been prescribed in the law has to be taken on the final scheme, okay, whatsoever has been placed before the general meeting and the creditor meeting. Plus currently the scenario is that the words present and voting is not there, so we are looking for if the creditor meeting is not happening, or the creditors meeting is happening but all the creditors are not joining, then we have to approach for the NOC from those creditors. Once the general meeting is done, within 15 days from the general meeting, there is a time bound process, within 15 days from the general meeting, the scheme, final scheme has to be filed before the honorable RD having the jurisdiction on the transferee company. Then
that and simultaneously that particular scheme has to be filed, final scheme again has to be filed to the ROC, OL, income tax and the respective specific regulator. Then again the 30 days window will be there for their comments, objection or suggestion on the final scheme. And once that 30 days is elapsed, whatsoever report has been generated by the OL, ROC, respective authorities, specific regulators I am talking about, income tax authority, they have to forward that report to the Honorable RD directly. And then after the Honorable RD has another 30 days to pass on the order. सर एक लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन है आपकी इजाज़त से कि अगर कंपनी ने सभी क्रेडिटर से या 90% क्रेडिटर से एनओसी ले लिया है तो उस सूरत में मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स बुलानी पड़ेगी या वो देन इट इज नॉट रिक्वायर्ड देन इट इज नॉट रिक्वायर्ड डिस्पेंस हो जाती है वो डिस्पेंस हो जाती है थैंक यू सो एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड that during this particular process there is a requirement of certain form filings also. That first form filing is at the board meeting. If the company is not a private company, then that company has to file MGT 14. Second form filing is at the time of general meeting. Then that company has to file the MGT 14 for the resolution which has been passed. Prior to that, in between these two MGT 14, there is a requirement to file the declaration of solvency. This declaration of solvency has to be filed prior to the general meeting. Okay. That is CA 10. Okay. That has to be filed in CA 10 in GNL 1. Okay. So that is, these are certain form filings which is required. That is very minimal requirement. And once the order is passed by the Honorable RD, then the INC 28 form has to be filed and the requested approval has to be obtained from the ROC for the registration of the scheme. तो दोस्तों आज हमने काफ़ी बारीकी से समझा संतोष जी से कि फास्ट ट्रैक मर्जर क्या है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं, कहाँ इसके लिए अप्रोच करना होता है, किस तरह से मिलता है, किस तरह से एनओसी लिया जाता है क्रेडिटर से, किस तरह से शेयर होल्डर से अप्रूवल लिया जाता है, कब एनसीएलटी उसके अंदर इंटरवीन कर सकती है। तो ये तमाम जानकारी आज हमें हासिल हुई श्री संतोष पांडे जी के माध्यम से और मैं तहे दिल से संतोष जी का धन्यवाद अदा करता हूँ। Sir, thank you very much for sharing your knowledge and enlightening us with your insights and deeper knowledge on this fast track merger issue. Thank you so much, sir. Again, it has been my privilege to be here in your podcast, and my best wishes to Jotwani Legal Talks for future endeavors. Thank you so much, sir. Thank you so much.